So we have discussed the life cycle of Plasmodium in liver cell, that is pre-erythrocytic phase. Now we will discuss the life cycle of Plasmodium in RBC, that is erythrocytic phase. Now the first was pre-erythrocytic phase that we have discussed. Now the second is erythrocytic phase. We have already discussed the first one, so the next heading is erythrocytic phase. Now the first is, so as we know, metacryptozoites within the RBCs enlarges and grows to trophozoites. Now tropho means khane wala. So trophozoites feeds upon human HB, that is hemoglobin, and produces a byproduct called hemozoin. Hemozoin. Now, hemozoin remains in the cytoplasm of RBC. Trophozoite stage is followed by signet ring stage by vacuolation. Now student, star mark hemozoin, star mark by vacuolation. Meanwhile, some granules, for example, yes, we have discussed Schaffner's granule appears in cytoplasm of RBC. I will discuss later what is the function of Schaffner's granule, which appears in the cytoplasm of RBC. Yes, the next is signet ring stage is followed by amoeboid stage by devacuolation. Next is
amoeboid stage and enlarges to become schizont. The schizont undergoes schizogeny. Now star mark this: schizogamy, that is multiple fission that grows into the number of nuclei. After that, the cytoplasm get gathered around the each nuclei, so that and results in so that the merozoites and free gametocytes are formed and results in merozoites and gametocytes. Now the merozoites, that is Plasmodium, releases lysine, and lysine causes breakdown of cell wall. Lysine that causes rupturance of RBC. Now rupturance of RBC makes merozoites and hemozoin free in blood plasma. Now students, star mark one thing, that is merozoites makes merozoites and hemozoin free in blood plasma. This is very important line. Star mark this. This is very important. Now hemozoin results in inflammation, that is fever. Now gametocytes can't grow further in human body due to high temperature of human body. Now student, I think you might be know all these points as I discussed in my first video. So मैं दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ ऊपर ऊपर से, बट मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में व्हेन मैं फ्लो पाथ समझा रहा था. सो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स विदिन द मेटाक्रिप्टोजॉइड्स बने कैसे थे? यस, मेटाक्रिप्टोजॉइड्स बने कैसे थे? जब शाइजोंट में शाइजोगेमी, दैट इज मल्टीपल फिजन हुआ था, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बने थे, आफ्टर दैट द साइटोप्लाज्म गेट गैदर्ड अराउंड द ईच न्यूक्लियाई व्हिच रिजल्ट्स इन क्रिप्टोजॉइड्स. नाउ क्रिप्टोजॉइड्स दो टाइप के थे, दैट इज मैक्रोक्रिप्टोजॉइड्स एंड मेटाक्रिप्टोजॉइड्स, दैट इज माइक्रोक्रिप्टोजॉइड्स. जो मैक्रोक्रिप्टोजॉइड्स थे वो लिवर सेल में जाके दोबारा प्री एरिथ्रोसिटिक फेज कंप्लीट कर रहे थे, और जो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स जो फ्रेश आरबीसी में जाके फ्रेश आरबीसी पे अटैक कर रहे थे. तो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स विद इन द आरबीसी एनलार्ज करके ट्रोफोजॉइड्स बना रहे थे. ट्रोफोजॉइड फीड करता है ह्यूमन हीमोग्लोबिन पे और एक बाय प्रोडक्ट हीमोजॉइन बनाता है. But byproduct of hemoglobin is bilirubin and biliverdin, but that
is not a case of pathogenicity. यहाँ पर पैथोजेनिसिटी का केस है तो बाय प्रोडक्ट हीमोजॉइन है. हीमोजॉइन remains in the cytoplasm of RBC. Trophocyte stage is then followed by the signet ring shape by vacuolation. Then meanwhile some granule that was Schaffner's granule, मैं आगे function बताऊंगा इसका, appears in the cytoplasm of RBC. Then the signet ring shape is followed by the, yes, amoeboid stage by devacuolation. Then amoeboid stage enlarges and grow into, yes, schizon stage. Then it undergoes the schizogamy, that is multiple fission, results in number of nuclei. After that, does some cytoplasm get gathered around each nuclei, which results in the merozoites and gametocytes. The merozoites releases lysine and causes the rupturance of RBCs. The rupturance of RBCs causes the merozoites and hemozoin free in the blood plasma, and due to hemozoin in the blood plasma, there is inflammation which results in increase in temperature. So the gametocytes can't grow further in the human body due to high temperature that was caused by hemozoins. So this was erythrocytic phase. I hope मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया, वैसे मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ. You can take referral from first video. मैं इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी लिखवा रहा था जो मैं बता रहा हूँ. So the next is, यहाँ पर erythrocytic phase खत्म होता है. Now the gametocytes and female anopheles. Heading is gametocyte and female anopheles. Life cycle and female anopheles. So the first point is, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में, तो इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी लिखवा रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाना वो फ्लो पार्ट. So the first is gametocytes from human body enters in female anopheles during blood sucking. क्योंकि गैमेटोसाइट्स ह्यूमन की बॉडी में सर्वाइव मतलब ग्रो नहीं कर पाते ड्यू टू हीमोजॉइन इज रिलीज्ड इन द blood plasma, which causes the inflammation that results in the increase in temperature. So this is not the optimal condition for gametocytes. So they enters into the female anopheles through the proboscis when the female anopheles come for blood sucking. So in female anopheles, gametes undergoes gamogamy to produce, yes, respective gametes. Male gametocyte produces sperm by exflagellation. Syngamy leads to zygote. Zygote starts to move to get settled down in the wall of gut called stomach. This is very important. Hook-night or vermicule.
Stomach this. Zygote get settled in the wall of gut and becomes oocyst. Cyst around zygote is partly formed by zygote itself and partly by wall of gut. Stomach this, partly by zygote itself and partly by wall of gut. Later, oocysts become active and becomes sporont. Sporont, nucleus of sporont undergoes one meiosis and repeated mitosis. Stomach this, one meiosis and repeated mitosis. Which results in number of nuclei around each nuclei. Some cytoplasm get gathered and results in number of sporozoites. Sporozoites get stored in salivary glands. Stomach this, salivary glands. Stomach results in number of sporozoites stored in salivary glands. Now students, I am writing the very important line of this whole flow path. सोच के बताना कि मैं ठीक लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं. Chemical oblique spore oblique process responsible for reoccurrence of fever is hemozoin oblique merozoite oblique erythrocytic schizogamy. Stomach chemical spore process. Stomach hemozoin merozoites and erythrocytic schizogamy.
केमिकल, हीमोजॉइन, स्पोर, गैस स्पोर कौन सा? स्पोर कौन सा? मीरोजॉइट, जो कि आरबीसी में कर रहा था। प्रोसेस इरिथ्रोसिटिक, इज दिस रीअक्रेंस ऑफ फीवर, अगर ये बार बार होते रहेंगे तो रीअक्रेंस ऑफ फीवर हो जाएगा। तो केमिकल, हीमोजॉइन, जो फीवर कैसे आया था? क्योंकि हीमोजॉइन ने इन्फ्लामेशन करी थी और उससे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, तो फीवर के लिए केमिकल था हीमोजॉइन, क्योंकि उसने इन्फ्लामेशन करी थी। स्पोर कौन सा था? जिससे हीमोजॉइन, देख बेटा तीनों बातें लिंक है। यहाँ देखो, हीमोजॉइन ये क्या है? केमिकल है। बना कैसे था? डिग्रेडेशन ऑफ एचबी से। हीमोजॉइन ने इन्फ्लामेशन करी थी। यस, इन्फ्लामेशन से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, मतलब फीवर आया था। तो पहला फीवर का केमिकल कौन सा हुआ? हीमोजॉइन। अब हीमोजॉइन बना कैसे था? तो हीमोजॉइन बना कैसे था? जब मीरोजॉइट ने रप्चरेंस ऑफ आरबीसी करा था, उससे क्या बने थे? एक तो हीमोजॉइन रिलीज हो गए थे ब्लड ब्लड प्लाज्मा में, और मीरोजॉइट्स रिलीज हो गए थे। तो स्पोर कौन सा है? मीरोजॉइट, जिसने हीमोजॉइन को बना दिया। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर कौन सा? मीरोजॉइट। एंड प्रोसेस, ये प्रोसेस कब हुई? कौन सी थी? इरिथ्रोसिटिक फेज। तो ये इसको याद रखो। So the next is symptoms. Symptoms of malaria: high fever, shivering, fever, usually at late hours of day, and splenomegaly. Due to high production of phagocytic cells.